Good morning, Sridhar. Good morning. Can you all hear me fine? Yes, sir. Good morning. Good morning, Jay. Yes, sir. Good morning. Good morning. All right, let's start with Dibyendu. सर आईसीआईसीआई एसएल हुआ सर, तो ट्रेंड को मार्केट का ट्रेंड को समझ नहीं पाए लास्ट 2 दिन। Okay. Rinku? निफ्टी का वो So ICICI is the only trade, huh? only Okay. Rinku? Yes, sir. Asian Paints. So it was in profit. Hmm. But sir, Ravi Chandra, there is one guy. He asked me to ask question on LT. So can you just look on LT? I think there are some issue on LT. He was saying that he made some higher high, lower low. I mean higher low, but still it's hit the SL. Larsen and Toubro, LNT. Okay. Siddharth? Sir, capital first, Hmm. CAPF and Bank Nifty 26,100 put. Hmm. Okay. Good. Sridhar? Good morning, sir. Sir, I took 3 trades, all are SL. 21st, I took Adani Ports, it's a stop loss, and 22nd, I took HDFC Bank and Beta India. Both are stop loss. Can you revise that trade? What's the problem? What is the third one? Bata India, right? Beta India, sir. Adani Port, HDFC Bank, and Bata India. Yes, sir. Okay. Fine. Uday? Taken 20%, sir. Very good. Rajiv? Sir, good morning. Good morning, Rajiv. Hello, sir. Good morning. Good morning, Jay. Infosys था सर स्टॉप लॉस हो गया था। Infosys स्टॉप लॉस। Infi short था? नहीं बाय था। Okay. All right. Nagesh ji? सर मैंने झील लिया था सर 40% रिटर्न बाय साइड। Very good. Okay. ठीक है.
से शुरू और करते हैं। रेमंड हाँ सिद्धार्थ, हाँ जी। सर, एक रेमंड देखेंगे सर। रेमंड रेमंड, ओके। नीचे से शुरू करता हूँ। स्टार्ट विद इन्फोसिस इन ऑलराइट। किसने लिया था? राजीव जी। राजीव जी, ऑलमोस्ट इस एरिया से एक सपोर्ट बना था, राइट? इस वाली जगह पे इस वाले कैंडल ने Yes. बनाया था। अगर डेली चार्ट्स पे देखें तो ये वाली जगह से एक सपोर्ट बनना शुरू हुआ था, राइट? इन दो कैंडल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद कुछ इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। कहीं पे भी हमको कोई सपोर्ट फॉर्मेशन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, राइट? और अगर इन दो कैंडल्स के बीच में देखें सर, ये दो कैंडल्स, तो ये दो कैंडल्स 20 तारीख और 21 तारीख की है, राइट? जो प्राइस मूवमेंट हुआ है यहाँ Yes. पे, ये 20 और 21 के बीच में हुआ है। 20 और 21, अगर 20 और 21 के बीच में हुआ है तो हम देख सकते हैं कि डिलिवरेबल्स में भी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट है, और अगर देखें तो 640 है, 619 है, तो प्राइस में भी ब्रेकआउट है, राइट? नीचे की तरफ, करेक्ट। तो अगर ऐसा है और इसको अगर उल्टी दिशा में जाना है, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि बाइंग हुई है, राइट? जिसकी वजह से इसको अब उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाना चाहिए। तो गुड मॉर्निंग शिव योगी। तो हम मान सकते हैं कि ये वाले एरिया से ये वाला जो एरिया है, इसके बीच में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ये फॉल किया था इस दिन पे, तो पहला सपोर्ट कहीं यहाँ पे जनरेट हुआ था, राइट? इस वाली जगह में। और ये जनरेट होने के बाद यहाँ पे एक फॉल जनरेट हुआ था इस वाली जगह पे। तो अगर आप देखें ये वाला जगह और ये वाला जगह,
इस वाली जगह में कुछ टर्न अराउंड दिख रहा था हमको, करेक्ट, इस वाले एरिया में, राइट। अगर आप देखें तो कुछ इस वाली जगह से सपोर्ट लेना शुरू हुआ, बांधना शुरू करा इसने, हम्म राइट। हम्म ओके, इस वाली जगह से जब सपोर्ट बांधना शुरू किया, मान लीजिए कि ये वाला कैंडल है, ये इसने गिरने की कोशिश करी, रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद फिर वहां हिट, यहाँ पे दोबारा हिट किया, यहाँ दोबारा हिट करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया इस वाली जगह पे, राइट, यस करेक्ट। यहाँ पे इसने सपोर्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया। जब इसने यहाँ पे सपोर्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन किया तो इसका मतलब है कि यहाँ से अब गिरना थोड़ा मुश्किल है इस वाले लेवल से, करेक्ट। इस वाले लेवल से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इस वाले लेवल से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है तो इसका मतलब है कि इस वाली जगह से इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, राइट। तो आपका बाइंग कहाँ था, यहाँ पे था या कहीं और था? नहीं सर, ऊपर ही ले लिया था। यहाँ कहीं पे था जब सेकंड कैंडल ब्रेकआउट हुआ था ना, वहीं पर लिया था। ओके, ठीक है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 जहां हमने गलती करी है वो ये है कि ये लो तोड़ रहा है, राइट। हम्म अगर ये लो तोड़ रहा है, इसका मून नीचे की तरफ है, अभी ऊपर की तरफ नहीं है, राइट। पर अगर हमें ये लग रहा है कि ये काफी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम, क्योंकि देखिए डबल से ज्यादा का ही हाँ, है ना। ब्रेकआउट था सर, हम्म दोनों मंथली। हम्म, तो डबल से ज्यादा ही दिख रहा है अपने को, ठीक है। मंथली ब्रेकआउट भी है, राइट। अगर ब्रेकआउट है तो इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि अच्छा चलो ये नीचे गिरा है। अगर ये नीचे गिरा है का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए, राइट, ठीक है। मतलब कि पहला अंदेशा आपने लगाया कि अच्छा चलो गैप डाउन होकर नीचे गिरा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, इसमें बाइंग हुई है इन्वेस्टर बेस की, करेक्ट। अगर बाइंग हुई है तो इसको सपोर्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि मुंह नहीं घुमा है ना। नहीं तो क्या होता है कि यहां से ये खुलता है यहाँ पे, राइट। और इस दिन का ओपन कितना था, 640, 622 था सर। ठीक है। ये कम से कम, 640 तक। हाँ, पिछले दिन का जो ओपन था ना 640 पे था। हाँ हाँ। यहाँ से खुल के ये कम से कम 640 को तो ब्रेक कर देता। मैंने ये वाला ओपन क्योंकि प्राइस सेकंड उठाया, कैंडल। जो कल का ओपन प्राइस था ना, मतलब बुलिश हो जाने के लिए कम से कम इसको तो तोड़ता, किया नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सपोर्ट पे चल रहा है। इस वाले एरिया में अगर आपका बाइंग होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि ये जो सपोर्ट बना है ना यहाँ पे, ये सपोर्ट को फॉर्म नहीं कर पाता, इसको दिक्कत होती। इस सपोर्ट को फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको, राइट। ये सीधा डायरेक्टली यहाँ से गिर जाता इस वाले एरिया से। तो ऐसे केस में या तो 40 के पास जाए तब से बाय करना हाँ है, या नीचे सपोर्ट से बाय करना है? हाँ, देखिए, होना क्या चाहिए कि ये बहुत तेजी से गिरा है, राइट। आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये अगर इतनी तेजी से गिरा है तो मोस्ट लाइकली शायद इस एरिया को हिट करेगा, राइट। हम्म, इस वाले एरिया को शायद हिट करेगा 640 को। तो इसका मतलब है कि आप यहां से बाइंग को करेंगे अगर आपको बाई करना है, ठीक है। या फिर इसको ब्रेकआउट हो जाने दीजिए यहाँ से, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हो जाने मतलब दीजिए, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट ओपन होगा ना तो ये इसके भी ओपन ऊपर ब्रेक चला जाएगा। ओपन ब्रेकआउट हो तब। हाँ, क्योंकि देखिए 640.05 पे पड़ा हुआ है इसका हाई पिछले दिन का। हाँ। आज ऊपर जाना ज्यादा आसान है बिकॉज इट इज 628.15। हाँ। आज इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना इज कंपैरेटिवली इजी, करेक्ट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे बाइंग नहीं है, बाइंग एटलीस्ट पहले सपोर्ट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। या तो नीचे करेंगे या फिर ब्रेक करने के बाद करेंगे। हाँ, या फिर क्या होता है कि ये ऐसे धड़धड़ाते हुए ऊपर चढ़ता पहले, फिर ये नीचे आता और पहले सपोर्ट को ब्रीच नहीं कर पाता, ब्रेक नहीं कर पाता। तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ ऊपर की तरफ इस ट्रेड को ले रहे हैं। पर इस केस में क्या है कि सपोर्ट यहाँ पे है, और अगर मैं देखूं, वैसे जनरली देख लूं, अगर मान लीजिए कि ये ओपन हो गया, मान लीजिए
ये ओपन हुआ, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम वगैरह आया, राइट। ये वॉल्यूम वगैरह आया, वॉल्यूम वगैरह आने के बाद ये वॉल्यूम गिरने लगा। इस वाली जगह पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, देखिए इन दो कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम बढ़ा है। जब इन दो के बीच में वॉल्यूम बढ़ा है तो कोई खास मूवमेंट तो है नहीं, ये तो इनसाइड कैंडल है, राइट। इन दो के बीच में वॉल्यूम बढ़ा है, राइट। इन दो के बीच में भी, अगर मैं ऐसे ही देख रहा हूं इस चीज को, अगर इन दो के बीच में ये वॉल्यूम बढ़ा है तो इसने इसको तोड़ा है, राइट। अगर इसने इसको तोड़ा है तो यहां पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, क्योंकि ये टूटा है नीचे, राइट। ये वाला जो कैंडल है, इस वाले कैंडल पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, तो इस एरिया में तो हम वैसे भी बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर बाइंग को करना है तो आपको बाइंग को किसी सपोर्ट एरिया में करना पड़ेगा, जहां से आपका स्टॉप लॉस भी फेवरेबल हो, ठीक है। तो इसका मुंह थोड़ा सा घूम जाने दीजिए, आप इसको कर सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट एरिया में से बाई करके इसको ट्रेड कीजिए। ओके। सर, सर 22 नवंबर को हम देखें, सर एक बार थोड़ा सा जूम करेंगे प्लीज। 22 को, ये वाला ना। हाँ हाँ, मतलब लास्ट डे को ही, हाँ एक बार। तो मान लो अगर हम लास्ट दिन के क्लोजिंग देखें तो इसने एक सपोर्ट बनाया था, हम्म, ठीक है। और हम नेक्स्ट डे पे आएंगे तो ये पहला एक रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, राइट। तो जो आपने बताया इसने रेजिस्टेंस किया है अराउंड, ये जो फिफ्थ कैंडल है यहाँ पर। मान लो ये कहाँ खुला था, 622.25, 622.25 पे, राइट। एक 620, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, मान लो राइट। 622.25, जिससे मुझे ये पता लगे, क्योंकि सुबह सुबह ना दिखता नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है। क्योंकि जैसे ही स्टॉक खुलता है ना, पिछले दिन के रेफरेंस में कुछ दिखता नहीं है, तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो जो कि ओपन प्राइस पे हो आज ही के, ठीक है। इसके ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, और इसके नीचे राइट। सपोर्ट मिलेगा। ये जनरल फिनोमिना है इंट्राडे ट्रेडिंग का, राइट। अब इसके ऊपर सबसे पहले आपको आपको सपोर्ट से मतलब नहीं है, इस लाइन के ऊपर सपोर्ट से आपको कोई मतलब नहीं है अभी। पहला राइट। फॉर्मेशन रेजिस्टेंस का होना चाहिए। राइट। देखिए, पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन अगर आप वैसे देखो तो यहाँ पे हुआ है, अगर ऐसे भी देखें तो इस वाली कैंडल पे हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये ग्रीन है, उसके बाद ये इसको पहली बार लो को ब्रेक किया, मतलब एक बियरिश अलाइनमेंट बना है, करेक्ट। अगर ये बियरिश अलाइनमेंट बना है तो यहाँ कहीं पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है, राइट। ओके। अब जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है, तो इस एरिया में तो आप नहीं करना चाहेंगे बाइंग, राइट। राइट। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ये शायद यहां से गिरेगा, राइट। या तो क्या होना चाहिए कि इस एरिया को ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। इसके ब्रेकआउट होने का जो तरीका है वो क्या है कि जब आपने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, कुछ ना कुछ हाई तो बना है ना, राइट। ये ऊपर गया है ना, ये वाला कैंडल, इसका क्लोजिंग हाई जो है ना, वो कम से कम इससे ऊपर होगा। दैट शुड बी विद ग्रेट वॉल्यूम, राइट। हाँ, ये वाले जो क्लोजिंग हाई है, सॉरी, ये वाला जो हाई है इस वाले कैंडल का, ये इसके बाद वाले कैंडल का जो क्लोजिंग हाई है वो उसके ऊपर होना चाहिए। राइट। क्योंकि देखिए, अगर ये एरिया बुलिश होता, मतलब ये देखो, ये एरिया बुलिश है ना, ये ऊपर जा रहा है, देखो ये हाई इज हायर, लो इज हायर, करेक्ट, ऐसा है ना। मतलब जो स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच का, वो स्ट्रक्चर ये है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, करेक्ट। तो इसको तो छोड़ दो, ये तो मोहरा ट्रेडिंग है। अब मान लो ये वाला दिन है, करेक्ट। इस वाले दिन पे आपका जो परसेप्शन है वो क्या है, लॉन्ग है ना, राइट। ठीक है। अगर आपका परसेप्शन लॉन्ग जाने का है इस वाले दिन पे, तो अभी होना क्या चाहिए, अब देखिए इस दिन का एक बारी मान लेते हैं, हमें ये सब नहीं पता कि ये नीचे गिरने वाला, हम तो बाई करने वाले हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए 9 तारीख था ना वो? राइट सर। 9th को द ओपन प्राइस वाज 679। 679। तो सबसे पहले तो आई से ड्रॉ रेफरेंस लाइन सो दैट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आई एम एबल टू फिगर आउट where should be the support or where should be the resistance, correct? Now वो तो ऊपर चला गया, if you look at it, it is here and the price is here, right? And it started falling, so what will it form? पहला चीज क्या फॉर्म होगा? Support. Support, very good. So first thing has to be support because it is trading below the open price and the price is bullish. So let's see. मान लीजिए somewhere over here the support formation has happened, correct? इस वाली जगह पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया है तो मान लीजिए ये वाला कैंडल है, करेक्ट? अब अगर ये वाला कैंडल है तो अब इसको, इस एरिया को तो ब्रीच नहीं करना है ना, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको क्या होना चाहिए, ये ऐसे करके ऊपर जाना चाहिए और ओपन प्राइस को तोड़ देना चाहिए। जो अभी तक का सिग्निफिकेंट एरिया है वो ओपन प्राइस ही है, करेक्ट? या फिर अगर मैं कल का एक रेजिस्टेंस स्पॉट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे है इन दो कैंडल्स के बीच में। अब जब यहां से सपोर्ट लिया है इसने इस वाली जगह से, तो कल के रेजिस्टेंस को तो तोड़ेगा ही ना ऊपर की तरफ। अगर देखें तो पहला रेजिस्टेंस तो इसको यहीं पे मिला था इन दो कैंडल्स के बीच में, राइट? ये गया ही नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं भी गया तो इसका जो सपोर्ट, ये लो है ना यहाँ का, अब इसको यहाँ कहीं पे सपोर्ट मिला था, राइट? तो अगर यहाँ कहीं पे सपोर्ट मिला था तो यहां से अब घूम करके इसको ब्रेक करना चाहिए। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, राइट? आप मान लीजिए कि इंतजार करते रहे पूरा दिन कि अच्छा चलो ये गिरेगा, नहीं गिरा, राइट? अब जब नहीं गिरा तो हुआ क्या, ये फाइनली नीचे आके क्लोज हो गया, राइट? ये देखिए, ये यहां से नीचे आके क्लोज हो गया, तो क्या ये इसका मुंह घूम गया? देखिए इसका मुंह, ये बुलिश था यहाँ पे ये बेरिश हो गया, राइट? इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो गया, नीचे गिरने वाला हो गया, राइट? अब अगर ये नीचे गिरने वाला हो गया, मान लीजिए अब ये गिर रहा है, करेक्ट? नाउ इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग। नाउ इफ इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, लेट्स सी, ऑन दिस डे यू वांट टू सेल, करेक्ट? इस वाले दिन पे मान लीजिए कि आपको बेचना है। अब अगर आपको बेचना है तो क्या होना चाहिए, हम मान लेते हैं कि ये कौन सा दिन है, 12th, 12 तारीख ओपनिंग इज 666, करेक्ट? सो इफ इट इज 666, ओके, द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव, तो क्या फॉर्म होगा? पहला रेजिस्टेंस सर। रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होगी। मान लेते हैं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन इस वाले कैंडल पे हुई, करेक्ट? देखिए सक्सेसफुली ब्रेक कर पाया क्या ऐसे? सर इसके लिए जो पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा वो इससे पहले जो रेजिस्टेंस बना था वो करेगा, कि जो ऊपर वाला है ये, इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है ना शायद? नहीं हुआ, वो लो नहीं बना उसका। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ जी। राइट, ठीक है। मान लेते हैं इन दो के बीच में हुआ है, ठीक है? राइट। तो ये वाली कैंडल है, राइट? ठीक है, राइट। अब देखिए
Hello, sir. Before that, there is one resistance, sir. Fifth candle, the red candle. This one? Yeah, Okay. yeah, this one. So Yes. this is the place. ठीक है? So it formed a resistance. अब देखिएगा. You want to do what? Buying. Sorry, selling. Sell. Yeah. Okay. First resistance, say second resistance, and then again another resistance. Okay, and let's say another resistance. All right. Now let me extend all this. Okay. Okay, I roughly marked the high of yesterday. Okay. So it started moving up, correct? So it formed a first resistance, broke out, second resistance broke out. Now it is going towards the high to become bullish, that it will touch here and will become bullish. It takes a resistance here. Does it come down? Does it take the resistance from here? Because when this started moving up, these are resistances, correct? So resistances will also form what? Support, What? right? Because these are all significant areas, correct? Now, if they are all significant areas, what will happen? Once the price broke this area, it should form it as a support. If it is breaking this area, it should form it as a support. If it is breaking this area, it will form it as a support, right? Now, when this formation has happened, do you see this candle is a big breakout, Yes, sir. Yes, sir. right? So it is telling us a support formation has happened here, right? Because the price is quite strong. So it is breaking out, right? Now, when it is breaking out, a second resistance formation has happened, right? Now, when the second resistance formation has happened, do you see here the price is still strong? It is going up, correct? Right. After this formation, when this breakout happens, this is also quite strong. See, it's happening with the breakout, right? In reference to the previous one. Okay, fine, no problem. Do you see after this area, say for example, if I try to look at, a stronger sell area, I can see a stronger sell area over here, right? In between these two candles, which is this and this, right? This one and this one, where you have drawn the resistance. So this is the area which is a stronger sell, correct? Okay. The same way, there is a stronger sell area which is here, over here at this place, right? At this area, there's a Yes, stronger sir. sell. Okay. Now at 1150. Now 1150, this is the area in between these two, correct? In between these two. Now tell me, when this resistance was formed, it was taken out. It was taken out and it went above. So it has formed a support. Now, when it is coming down, it should form a support, and you see it has formed a support actually over here, right? Now, after forming a support, it should break the high, right? It should not break the low. इसको लो नहीं तोड़ना चाहिए यहाँ पे, correct? It should not break the low over here. Now,
on this day, where did I draw the first resistance or the resistance that it took? Say somewhere closer to this area, right? Somewhere over here at this place. ये कल का हाई है, and this was the last, time it was bullish. Do you see the zone? It actually went like this, and did it come down? Distance, yeah. Right. So it went like this and it came down. Okay. When it went like this and it came down, did this candle break this in between these two? Right. So this high was taken out, right? And it was broken out. Do you see there is a compression zone being formed here? See, a resistance formation. Anyways, you are wanting to sell this because of its structure. From somewhere in between this and this is a resistance zone. Okay. If that is so, it failed this area as a support. See, it is coming down. It is not able to sustain. It is coming down. Right? Correct? Now, if it is coming down, this was the area from where it started moving up. Right? It negated this area. Right? So it fell here and it went up over here. In between these two is also a support at the upper side. Correct? So this candle is where it failed. Do you see there was a resistance formation here? When it came down, this is what it did. ये यहाँ से ऊपर टूटा था, ऊपर टूटने के बाद नीचे गिरा था, नीचे गिरने के बाद यहाँ से ऊपर गया था अगला रेजिस्टेंस फॉर्म करने के लिए। ये वाला जो रेजिस्टेंस इसने लिया, मतलब ऐसे करके घूम के आया, ऐसे करके जब घूम के आया तो देयर इज नो रीजन, यहाँ से घूम जाना चाहिए वापस, हाई तोड़ना है इसको, क्योंकि बुलिश हो रहा है तो इसको हाई तोड़ना है। अगर ये हाई तोड़ना है तो फिर यहां से नीचे क्यों गिर रहा है? यहां से जब यहां गिरा तो शार्पली यहां से रिवर्ट करके ऊपर चला जाना चाहिए 677 लेवल्स की तरफ, which it is not doing, which means what? It is getting weak over here. And anyways, this zone is a weak zone where people might not want to buy because it's lot higher, correct? Second thing is, if it has to sell off, okay, now this is doing what? It has broken downwards, right? If it has broken downwards, it broke this low also, correct? Now if it is that, see the low was here, it means the immediate support is somewhere closer to this area, right? See, below this level, okay, somewhere in between this and this area is a support. So the price has to come here in order to become bullish. Now see, did the price come here and stop? It stopped over here and then it was being taken out with a lot of rigor. ठीक है, तो जब तक ये स्ट्रक्चरली आपको फेवर नहीं करता है, it is actually not a pick for the day. Then the fundamental direction of your trade should follow the structure of the stock's movement. So if it was moving down, it is moving down unless it breaks the high. जनरली क्या होगा, अगर इसको घूम जाना होगा ना, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे
फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, अप की तरफ है ना। इस वाले दिन पे अगर इसे ट्रेड करना है तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, राइट। अगर ऊपर की तरफ हमें इसे ट्रेड करना है तो होगा क्या, इट विल फॉर्म अ सपोर्ट एंड विल कम बैक, नो। आफ्टर फॉर्मिंग द सपोर्ट इट नेवर केम बैक, ये आया ही नहीं कभी वापस, है ना। तो अगर ये वापस ही नहीं आया तो इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मतलब व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपको पता है ओपनिंग प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो कि पूरे दिन में बदलता नहीं है। मतलब सुबह सुबह ही अटेन हो जाता है, प्री ओपन में ही अटेन हो जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता उसके साथ। मतलब नोबडी कैन चेंज अ ओपनिंग प्राइस। तो अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्राइस चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर चल रहा है तो सपोर्ट फॉर्म करेगा। ओके, नाउ इफ यू आर बुलिश, नाउ से फॉर एग्जांपल इफ यू आर बुलिश हियर, इस वाले केस में आप बुलिश हैं, तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट बना के ओपन प्राइस को तोड़ के वापस आना चाहिए ना, आया ना। यस और नो, Yes, आना sir. चाहिए, सर। नहीं आ पाया ना। देखिए आप, सपोर्ट को तोड़ के वापस नहीं आ पाया, इट कुडंट डू इट, राइट। अगर इस वाले एरिया में देखें, इस वाले दिन पे आपको क्या करना है, आपको सेलिंग करना है, राइट। अगर आपको सेलिंग करना है तो ये रेजिस्टेंस फॉर्म करने के बाद ये सपोर्ट की तरफ आएगा ना, राइट। सॉरी, सपोर्ट कह रहा हूं, अपना ओपनिंग प्राइस की तरफ आएगा ना। डिड इट कम, इट केम बैक, राइट। आफ्टर इट केम बैक इट कुड नेवर रिटर्न बैक, ओके, बिकॉज इट फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। उसके बाद से फॉल ही था, मतलब राइज नहीं हुआ ये, करेक्ट। अब मान लीजिए अब देखिए ये वाला एरिया ये फॉल हो रहा है, राइट। इन दो के बीच में क्या है, लो टूट रहा है ना, मतलब इट इज फॉलिंग, इट इज नॉट बुलिश, इट इज बियरिश, करेक्ट। अब अगर इट इज बियरिश, इस दिन पे ये नीचे टूटा है तो अगले दिन पे क्या बाई होगा या सेल होगा, ये Sell होना चाहिए. सेल होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे शायद हाई था इसका, ठीक है, इस वाली जगह पे कहीं पे हाई था मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा था तो इस वाले दिन पे एकदम से तो बुलिश हो जाना थोड़ा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस मुझे दिख रहा है कि ये इस वाली जगह से कुछ सपोर्ट आया था, यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे ही मार्क कर दे रहा हूँ इसको, कुछ इस वाली जगह पे, राइट। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है नो डाउट, सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे, देखिए अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब अगर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये ऊपर गया, इसने मान लीजिए कि इस हाई को तोड़ा, पर स्ट्रक्चरली क्या है, वीक है ना। आज के इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो ये वीक ही है, राइट। अब आपका जो ओपन प्राइस है मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं पे है, इस वाली जगह पे, क्या ये रेजिस्टेंस वगैरह लेने के बाद वापस आया, इस वाले दिन पे नहीं आया, ओके, इस वाले दिन पे नहीं आया। अब देखिए अगले दिन पे इसको फॉल करने में बहुत दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। देखिए ये वाला जोन मार्क किया था ना मैंने, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि यहां से सपोर्ट लेके यहां से ऊपर चढ़ जाएगा, करेक्ट, राइट। फिर इसको स्ट्रक्चरली नेगेटिव होना पड़ा, मतलब ये 2 दिन के बीच में देखे तो इसने लो तोड़ा है, राइट। अब अगर इसने लो तोड़ा है तो अब ये नीचे जाएगा, है ना, ये देखिए
फिर नीचे गिर गया। दूसरी चीज, स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला प्राइस वाज टेकन आउट इन दोनों के बीच में? क्लियरली ऊपर जाकर के क्लोज हो गया है, राइट? ये 29 तारीख 30 तारीख के बीच में, ठीक है। 29 तारीख 30 तारीख के बीच में एक थोड़ा सा डिलीवरेबल भी बढ़ा है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी बढ़ा है दोनों के बीच में। मतलब ये एक प्राइस वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट है, राइट? तो अगले दिन सबसे बड़ी संभावना क्या है ऊपर जाने की, राइट? चलिए ठीक है, यहां पे देखते हैं इन दो के बीच में ट्रेंड हुआ है 19 तारीख और 20 तारीख के बीच में। 19th और 20th के बीच में देखिए ये नीचे की तरफ ट्रेंड हुआ है प्रॉपर। 19th एंड 20th वॉल्यूम इज वीक वीक वीक, राइट? बट देयर इज अ प्राइस ब्रेकआउट, एक प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। अब वापस चलिए, इन दो के बीच में बिना किसी वॉल्यूम और बिना किसी डिलीवरी के ये गिरा है, मानते हैं ना? तो अगले दिन क्या होना चाहिए? शार्प रिवर्सल हुआ? नहीं हुआ। ओके, शार्प रिवर्सल नहीं हुआ। अब जब शार्प रिवर्सल नहीं हुआ तो क्या इसने आपको एक इंडिकेशन दिया कि वॉल्यूम बढ़ गया, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस भी नीचे गिर गया इन दो के बीच में? तो अगले दिन की सबसे बड़ी संभावना क्या है नीचे गिरने की? एम आई राइट? तो क्या आप बाई करना चाहेंगे? द आंसर इज नो। इस वाले पॉइंट से गिरा है ये, इसको कम से कम इसे तोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ये रफली जो है ये लो जो है 640.10 का बन रहा है, ठीक है। इसको पहले एटलीस्ट इसे तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर जा सकता है। उससे पहले इसमें ऊपर जाने की क्षमता नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन दो दिनों के बीच में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था, राइट? व्हेन आई वाज टेकिंग दिस एग्जांपल, करेक्ट? राइट? सो विच मींस व्हाट? इट रोज फ्रॉम दिस लेवल, राइट? इट ब्रोक आउट दिस लेवल, करेक्ट? तो इस वाले दिन पे एटलीस्ट इसको इसे ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं गिर सकता, बहुत प्रॉब्लम होगी उसे। इट विल हैव टू फॉल थ्रू दिस लेवल, ओके। और इस दिन का प्राइमरी डायरेक्शन क्या है? ऊपर ही है, ऊपर ही रहा। इस दिन का प्राइमरी डायरेक्शन क्या है? नीचे है, नीचे ही रहा। एग्रीड? तो थोड़ा सा आप दाएं बाएं देख लें। मान लेते हैं बाटा इंडिया, पहले एक बार थोड़ा उसमें देख लेते हैं, ओके। So what is the structural telling me? Short or long? Short, okay. Because lower lows, lower highs, and all that. Sridharan, did you buy, sell? Adani Ports buying, sir. This is Bata And India. Bata India sell side, sir. Sell. Okay. Still a stop loss, huh? Bata India. Yes, sir. Okay. So Bata India, let's say there is a breakout. This is also a breakout. 575, 7550. This is also price also breakout, right? Yes, sir. Downside breakout. So the primary direction down. So I would Yes, like sir. to trade it short. If I want to trade it short,
My selling level is 966, sir. The price is selling price is 966. Somewhere here, right? Somewhere here, this area. Yes, sir. Right. Okay. I brought it 11 o'clock candle, sir. 11 o'clock. Correct. Now, I'm short and roughly the price has opened here. Opening price was 76.10. So 976.1. Okay. So this is the area where it opened up. Okay. Now below this will form only support. Support. Right. First support I seen in the doji candle. Okay. So let's see. There seems to be a support somewhere over here. But low is same, sir. That Low two is candles are low is same. so it's okay. It's a support, no? So it should go and close above the open price of the candle. If the lows are same, then at least it should go and close above the opening price of the previous candle. Yes, sir. Okay. So if that is the case, then most likely this is where the support formation has happened, right? Okay, sir. The support formation is somewhere here, right? So the support is given up. See, the support is given up. Then let's say the next support formation is between, say, these two candles. We can't say that doji candle, sir. The doji candle also support. This Doji one? candle and yeah, red candle, green candle. Yeah. Okay. I took that is the first support because the previous one, the low price is the same, so I didn't took that. That's fine. This is the first support, and yeah, next three candles are second support. So let's say And this is the second, place. yes, sir. Okay, so this closes 968, right? 968 by 70, roughly 70 to 73. 72. Sir, actually, I took. We have to sell below the low level closing price. The candle low level is 966. So I Okay, you sold this one, yes, sir. right? Yeah, You sold this area, yeah. which actually started forming a support. Correct? Yes, sir. Okay, that is why your stop loss got hit. Actually, where we have to sell, sir? The closing price or low price? Okay, I'll tell you. See. This candle and this candle, right? Yes, sir. Okay, so we are saying that there is a support which has come here, right? Yeah. So this is the level where it is going up, correct? It defended this low. That is why we are calling it as a support candle, right? Yeah. I took reference the next candle, the green candle and the doji candle. So It's, which means support. this low is getting defended by this candle. Yes, sir. Okay. Just keep it as a check. It's a falling volume. Huh? Yes, sir. Okay. If it is a falling volume, then most likely the support formation is not valid. Oh, Okay. So don't worry about it. Not much of this thing, but in between these two, if there is a support formation, Okay. previous support was, let's say, somewhere in between these two. Yes. So
this is the low which is defended and the support is formed. Yes, sir. So this is support, right? And let's say this is support candle. This is the place from where it is turning around. Yes. Now, in between these two levels, if it has to fall, so you marked these two lows which were defended. Yes, sir. When this came down, from here it moved up, right? Yes. Okay. So it means when this is going up, it has to revert down from within this area. Okay. Okay. Got it? We have to sell 971 area. Because see, you are below, right? Yes, sir. Below. Okay. You are below. How does stocks move? Stocks move like this, right? Correct? Yes, So sir. it will form a low, then will try to come back up. Now, when it will try to come back up, there would be a resistance here and there would be a support here, right? Yes, sir. It will go back and before this resistance will try to turn back. Correct? Okay. And continue further. Then when it is continuing, again it will try to come back, right? When it will try to come back, there is a resistance, there is this support and this resistance, correct? So Yes, when sir. it is going back, here is a resistance, here is the support. So somewhere in Yes. between these two levels, it will try to turn around. Oh. In Now, between turning these. area we have to sell. Huh. So you'll have to try and first figure out. You'll have to figure out, right? Because see, when this defended this area, Okay. we are saying that, okay, this is a resistance, support, right? So if this was a support, this will form a resistance, right? Because it is below the open price, correct? If that is the case, after that, when it fell, it would have fallen up to some level, right? Yes. From where it will revert and then again continue. So if this was a support line, from support, I got to know that it went to this area. Then it came to this area. Then it went to this area. And it became bearish. Yes, sir. From here, the support has come. Right? So, which means what? This is where the bearishness has happened, right? Yes. In this swing. So, the price will go and turn around from here only. The Yes. biggest likelihood would be this area. Okay. Okay, because what happens is, if this swing is broken on the upside, it will go back into a bullish zone. Then it is no longer a bearish stock, Yes, sir. right? Yeah. And you will find this, all this will coincide with previous day levels also. Okay. All this will coincide with previous day levels also, because see, when a stock breaks a low, why did it form a low here only yesterday? Because there were no sellers below this level. See, there were no sellers at all. Since there were no sellers, price started moving up, Yes. which means below this level, it should find, if not buyers, it should find no sellers here, right? So it Yes. will go up. Very few cases it straight away falls, which is a different case. But below this area, finding sellers is difficult. Sellers will be found only above this zone. Okay.
So from here, if you look at it, it went down. It became bearish. Bearish in the sense that, okay, people pushed it down. From here, they started finding buyers, right? So the price started moving up. When it will move up, it is returning back below the low because it should not happen. From here, it should go up. Got it? Got it. Okay. Because this is a swing. From here, it went up. From the low, it actually went up. See, the swing is broken on the downside. This is the zigzag Yes. pattern which I've taught, right? It is Yes, broken sir. on the downside. So now it will try to go up and then continue, right? Yes. And anyways, the price structure is telling you it is bearish. One, it is bearish. Two, it is delivery volume breakout and all that. Correct? Yes. So you are convinced that my trading direction is only negative. Yes, sir. So if it is negative, then, you know, when it came for the swing, it broke the swing down. Now it will have to take support. It cannot happen that it won't take support. It took support and it went down. Okay. So for selling, you will have to use these pullbacks. Okay. Okay. Because don't forget that you are selling in the support zone. Okay, sir. Okay. If you were selling in the resistance zone, then it's a different case. If the price would have gone above this open price somewhere here, and it would have fallen from here, which is different case. Like we took Infi. Okay. Okay. Let's look at HDFC Bank. HDFC Bank is buy. Yes, sir. Buy side. Okay. So let's say structurally it is buy. Yes, sir. Okay. And there was some amount of Volumes increased. okay, fine. Okay. Now let's assume this is the buy open price. Okay, let's see. 1213.25. Okay, this I'm drawing just for simplicity. Otherwise, Okay. there's no so that you are able to see. Now, above this area, there would be only resistance formations. Yes, sir. Previous day it took support, so I'm waiting for resistance and resistance breakout. I try to. Hmm. Okay. Siddharth, can you hear me? Yes, sir, yes, sir. Okay. All right. So now the structure is up.
So I want to trade it upside, correct? Because Yes, sir. it's breaking on the upside. All right. So there would have been some support and all that. Okay, fine. Now it started moving up. When it Yes, started sir. moving up, let's So first assume resistance that is, yeah, that is the resistance. this is a resistance, correct? Now, if this Yes, is sir. a resistance, the resistance is here, let's assume, or it tried defending this high, correct? Yes, yes, sir. Now, let's say close 32, 32. Let's say this is this thing, um, resistance, Resistance, sir. which means it's tried defending this, right? Yes, So this is the zone for buying, say, correct? Within this zone, the buying should happen. yes, Now sir. compare it to Bata 220, India. Bata 20, India, 20. this and this was the area. Yes, This is where the first support was created, somewhere here. Okay. yeah, And the next support was created somewhere here. This was the zone, right? yes, sir. Okay. I'm comparing it on the reverse side now. Okay. This and this. Now, so you know that there is a swing which is available from this place to this place. Correct? Yes, sir. What did you do in Bata? See, once the swing was formed, once you knew that, okay, there has to be a bearish swing, right? It went like this, it came down, it did this and this, which means what? When it came down from here, right? Yes, And yes, sir. then it started coming down from here. And it came down till this point. Yes, sir. Okay. It came down till this point, right? Yes, So it went like this and it fell. yeah. So it came here. Did it break? Did it break like this? It should break like No. this, right? Yes, sir. Okay. It will break like this, and you will come to know that, okay, when this swing was forming, say it went up to this level, right? Yes, Inside this. So maybe most likely this area will be my support area, right? Now I have drawn the line exactly here. Do you see it was trying to hold a support, yeah. right? Which it failed, Yes, sir. correct? So it was actually trying to make this move. And once it would have made this move, it would have slightly come back and would have tried to go up, right? Hmm. Yes, Now, in Bata India, see, when it broke the low, see, this is how it started moving down, correct? yeah. Right? So it started moving down like this, okay? You placed your order, say, over here. I'm just saying, okay? What happened when this was done? This is your reference. It should not Yes, sir. break this high. Yeah. So it went inside and was trying to turn around. When it tried to turn around, you took a shot here or you would have taken a shot here, whatever. Okay. But it has to proceed.
which means what? Say somewhat like this, correct? Yes, sir. Okay, so you saw that, okay, I got a support in between these two areas. Resistance. Resistance. Yeah. So if this is a resistance, this is another, this is also a resistance, correct? So in between Yes. resistance 1 and resistance 2, a support formation should happen. Now tell me something, if the support is formed, will it not break this level? In between these two, if a support is taken, will it not break this level? It will. In between this and this, in between this and this, the resistance should form. Did it form the resistance and break down? Hmm? Yes, sir. It did, right? So it continued down. If it is continuing down, it means it can continue down. It is getting sellers, right? Yes. Okay, in this case, in between this point and this point, it should find buyers. If it is find buyers, then it will continue on the upside, correct? Yes, sir. Did it continue on the upside? The answer is no. No. Okay, so there is no buying in between these two levels. But intraday perspective, we don't know now, sir. Once it's making breaking a resistance and going up and again coming down to the resistance point, that is the support area. We are bought it. But next moments, how we know that it's going up or not? No, no, no. That is what And we are trying to predict, no? Now, say for example, you said that, okay, this is where my resistance is formed, right? yeah, my buying level also it's 2023, sir. Okay. Now, if this is my resistance, is this resistance somewhere over here? Yes, sir. Correct? Yeah, More or less the same, right? yeah, Okay. I must say. So it broke this out, right? Yeah, When it broke this out, it formed a resistance, let's say somewhere here. yes, Okay. Which means it is wanting to proceed up, right? Now it yeah, means what? In between this level and this level, it should find buyers. yeah, It should find buyers and the price should break out, right? yes, sir. Correct? And the price should break out. Never happened. It came here. It was trying to look for buyers. It was finding buyers. Not that it was not finding buyers. Now it will break this out, right? Yes, sir. It is almost wanting to break this out, correct? Yes, Okay. Now it doesn't want to continue. Okay. So it will never go back to this level, 2034 or whatever. It will never go back if it doesn't want to continue. It is telling you that the price started consolidating here. Okay, the price has started consolidating here. And if you look at it from here, it went all the way to this place. After this, let's say it came here. I'm just drawing short swings, okay? From here to here. And finally it broke this level. yes, So whatever you had drawn, don't you think it rather went into the same zone and built resistance and came back? yes, And it had yes, built a resistance and it came back, rather. Okay. But you will not know to sell this area. Okay. So never try to sell this. It is a buy zone. So it should have returned like this. Okay. Now tell me something. Delete. I say that the open price is what the best you know, right?
So what was the open price? The open price was 2013.25, 18.2. and this day it was 2012, let's say. So yesterday's open price was lying somewhere here. Did it Yeah. finally break this level? Yes. If it does that, there's no hope. Okay. There's no hope because Okay. it has already broken the high. Its job to break the high is done. See, it was bullish, Sir, no? hello. So it should have formed a higher high, higher low. Haan, Siddharth. Sir, in HDFC Bank, this is making the highest of the day with a high volume, highest volume, right? Hmm. So if the low of that candle gets breached, can we go for a short trade in that? Okay, what you can do in this case is, see, आप इसमें स्ट्रक्चर देखिए, यहां से ट्रेंड होना शुरू हुआ है ना, इस वाली जगह से ट्रेंड हुआ है. ये वाला जो हाई है, इट इज 2013, 2013.9, ये भी ट्रेंडिंग कैंडल है. इस वाली जगह से ट्रेंड ब्रेक हुआ है, राइट? ठीक है, इस वाली जगह से ट्रेंड ब्रेक हुआ है. अगर यहां से ट्रेंड ब्रेक हुआ है, इट विल हैव टू स्टार्ट ट्रेंडिंग डाउन. जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रेंड अप हो रहा है, मतलब ये हाइस को ब्रेक करके क्लोज हो रहा है, राइट? अब इसको डाउन साइड में ट्रेंड होना पड़ेगा, तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो. अदरवाइज पोजिशनल शॉर्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर इंट्राडे में आप नहीं कर पाओगे जब तक ये ट्रेंड नहीं करेगा. अब यहां पे देखिए, ये इस वाली जगह पे ऊपर जाने लग गया, फिर दोबारा देखिए एक बार भी ट्रेंड नहीं किया, ये वापस अपने सपोर्ट पे आया जहां पे भी था. ठीक है, यहां से वापस ट्रेंड करने लग गया ऊपर की तरफ, राइट? इस वाले एरिया में इसने पहली बार ट्रेंड किया डाउन साइड पे. ठीक है, जब इसने ट्रेंड किया, ये क्लोजिंग हुआ, इस दिन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस वाले दिन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव, पर यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं. उसी तरह से यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ट्रेंड हुआ है इन दो के बीच में, आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं. इस वाली जगह पे इन दो के बीच में ट्रेंडिंग हुई है, आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं. अब मान लीजिए कि आज ये ट्रेंड कर जाता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है. ट्रेंड करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर अ स्टॉक. तो अगर ये ट्रेंड कर जाता है, तो इंट्राडे में एक आज क्या है, मंडे, ट्यूसडे को एक पोजीशन लेना बन सकता है. इसको शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी ऐसे गया है ना, ऊपर ट्रेंड करते हुए गया, तो ये ट्रेंड करते हुए थोड़ा सा नीचे भी आएगा. ठीक है श्रीधर, सॉरी सिद्धार्थ, हाँ सर, यस सर. राइट? आप इसको शॉर्ट तब करेंगे जब ये ट्रेंड कर जाएगा एक बार, फिर आप इंट्राडे में शॉर्ट करो, कोई इशू नहीं है. बुलिश स्टॉक को भी आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका ट्रेंड करना जरूरी है. So finally, my buying level is correct, or See, your buying level has to be here. 2023, sir. My buying level. So even if you bought, you should have bought somewhere over here, right? I brought it same level. Okay, this area, Yeah, 2023, same price. Yeah, same price. right? Yes. Okay, so 2023, and it should trend up. Okay. 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 Okay, another thing, Sridharan, Yes. when you look at this structure,
It started trending from here, right? And it stopped. Yes, sir. Refrain. Just refrain from buying at the tops, right? Whenever, Yes, see, sir. this was trending, right? This Yes, area. sir. So it is telling you it is coming from bottom to top. This day it stopped. So it is telling you a intermediate top is formed. Yes. Somewhere here, the intermediate top is formed. See, whether trending or not trending, the price came down first, Okay. right? And then again from this area, price started moving up. Somewhere here, correct? Yeah. So it is literally the same old place, right? Sir, 2015 is the I think year-end high of HDFC. So that's why it's taking too much of resistance हाँ over वो here. लेगा ही ना, मतलब लॉजिक है ना उसमें, राइट? अब यहां से अगर ट्रेंड कर जाता है तो एक इंट्राडे ट्रेड आप 40% रिटर्न या 30% रिटर्न ऑन कैपिटल का ले सकते हो, चाहे फ्यूचर्स में ले लेना, ठीक है ना? वो आपको उतना दे देगा जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो. ओके, Okay, sir. राइट. So we'll just take a 5 minutes break and continue. Okay. Okay.
ऑलराइट फ्रेंड्स, आई एम बैक। एक बार आईसीआईसीआई को भी यहीं पे कर लेते हैं, बैंक से कर रहे हैं तो। दिव्येंदु, बाई और सेल? हाँ सर, ये अपने ईयरली हाई पे चल रहा है। बाई किया था, सेल किया था? बाई किया था सर। ओके। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये ईयरली हाई का एरिया है। ये देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये यहाँ पे लास्ट ईयर का हाई बना था, ये वहीं पे है, राइट? अब आप देखिए, ये वाली जो जगह है, दिस प्लेस, इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग, राइट? ये जब ट्रेंड कर रहा है ये वाले एरिया में, तो लोग शॉर्ट कर रहे हैं इसको, राइट? देखिए, people are shorting this, correct? This day it stopped, right? अगर ये स्टॉप किया है तो इसको ऊपर जाकर के यहां क्लोज हो जाना चाहिए, तो ऐसे करके ट्रेंड बन सकता है, करेक्ट? हो सकता है ना ऐसा, राइट? अभी इस वाले जोन में देखिए, ये जब यहां से नीचे गिरा था, जो भी हुआ था, इस वाले दिन पे ट्रेंडिंग हुआ, राइट? तो ये अगले दिन पे भी थोड़ा ऊपर गया, फिर जब ये स्टॉप हुआ यहाँ पे, अगले दिन पे लोगों ने शॉर्ट किया तो ये ट्रेंड कर गया, ट्रेंड कर गया तो ये फिर शॉर्ट हो गया नीचे, ठीक है? क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टर तो ट्रेड करने नहीं आता ना, ओके? तो अभी से फॉर एग्जांपल, वेयर वाज अक्टूबर? अक्टूबर वाज समवेयर हियर, राइट? ये अक्टूबर का हाई है ना? ये वाला जो एरिया है, ये अक्टूबर का हाई है, ये देख रहे हैं आप? ये हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। Getting my point? Now, let's look at the data also. सेट हुआ है तो इसको रुकना पड़ेगा। हाँ, इसको रुकना पड़ेगा ना, इसके पास ऑप्शन नहीं है कोई। अब ब्रेक इनसाइड हुआ है तो वी हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन और वी कैन शॉर्ट इट इफ टुडे द लो इज टेकन आउट। see, there was a confirmation, right? Correct? यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये वाली जो जगह थी, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है ना अपने को 21 नवंबर को। ओके, जब 21 नवंबर को ये एक ब्रेकआउट सा कुछ दिख रहा है इस वाली जगह पे, तो 21 नवंबर ये वाली जगह थी, करेक्ट? ये वाली, इन दो के बीच में। तो ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, यस और नो? राइट? यहाँ पे इस वाली जगह पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये यही बता रहा है आपको। जब ये ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, इस वाली जगह पे जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है, इससे तो ज्यादा ही आया, और ये वॉल्यूम भी आया, तो प्राइस तो ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ तो इसका मतलब इसने यहां से सपोर्ट लिया है, इस वाली जगह से, ठीक है? अब अगर इसने इस वाली जगह से सपोर्ट लिया है तो इस हाई को ब्रेक करेगा ना, ट्रेंड करेगा। तो ट्रेंड करने का मतलब क्या है, या तो ये 360 के ऊपर खुलेगा, 360 के ऊपर, है ना?
या तो ये 360 के ऊपर खुलेगा या फिर रेजिस्टेंस को 360 के ऊपर फॉर्म करके ऊपर जाएगा, राइट? ओके। मान लीजिए यहाँ पे 13-14 इन दोनों के बीच में एक ब्रेकआउट सा दिख रहा है अपने को। यहाँ पे प्राइस जो है 366.30 है, यहाँ पे देखिए 361.95 है, तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। करेक्ट, 14th को ये देखिए 14 मतलब ये वाला, राइट? ये ऊपर पुश करके क्लोज किया है, इस एरिया को ऊपर पुश करके क्लोजिंग किया है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट लाइकली इट शुड गो अप। अब देखते हैं, ये वाली जगह, इसको पुश करके बाहर गया था ना, यहां कहीं पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन था, ओके? इसको पुश किया था, इसको ऊपर गया। अब इस दिन सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट का फॉर्मेशन इन दो के बीच में, करेक्ट? यहां से ये ऊपर गया है, तो कहीं यहां पे कहीं पे सपोर्ट है, इस वाली जगह पे, राइट? जो रिमार्केबल चीज है वो ये है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक करके ऊपर गया था, क्या ये सपोर्ट उसके ऊपर बना था? बना था ना, राइट? तो समझ गए आप? रेजिस्टेंस के ऊपर सर एक सपोर्ट बना, उसके बाद ऊपर गया, यही हाँ देखना है। हाँ, मान लीजिए पहला सपोर्ट कहाँ बना है, इस वाले जगह से इस वाली जगह तक, राइट? ऐसे करके बना ना, प्राइस नीचे आया, अब गिर जाना चाहिए, गिर ही नहीं पाया, हाँ, राइट? अब इस दिन का ओपन प्राइस देख लेते हैं, 1115, 6610, वापस घूम गया, देखिए वापस ब्रेक कर गया, सपोर्ट लेने के बाद घूम गया, वो ऊपर चला गया, तो ऊपर ही रहा, करेक्ट? अब देखो इस वाले दिन पे भी कुछ हुआ है ब्रेकआउट 15-16 के बीच में, ठीक है? इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? लास्ट प्राइस इज 366.95, ना ये इसके नीचे है ना ये इसके ऊपर है, करेक्ट? तो हमें देख करके ये पता लग रहा है कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 374 पे, देखो 16 तारीख को, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, करेक्ट? ये अगर ब्रेकआउट है तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, राइट? अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसको फिर नीचे ट्रेंड करना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट? अब जब ये नीचे ट्रेंड करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे ये देखिए इसने रेजिस्टेंस बनाया है,
तो मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो इसका पहला सपोर्ट कहीं यहाँ कहीं इस वाली जगह पे होगा, somewhere in between this and this. ठीक है, somewhere in between this and this, right? In this area. Started going up, down. Started trending also, right? अब ये ट्रेंड भी करने लग गया, लेकिन नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, इस दिन पे सपोर्ट तोड़ा तो गिर गया नीचे। ठीक है, तो इस डेटा में भी पता लग जाएगा। अब जैसे ये वाला दिन था, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। ये वाला दिन था, इसका लास्ट प्राइस क्या है? 56। 56 मतलब इन दोनों के बीच में नहीं है, मतलब इन दोनों के ऊपर या इन दोनों के नीचे नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया। इसका मतलब इसने 354.60 पे सपोर्ट लिया है ना? 54.60 पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर इसने सपोर्ट लिया है तो क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए ना, करेक्ट? ट्रेंड करना चाहिए ऊपर जाके। किया? नहीं किया। ओके, गॉट इट। सर अदानी पोर्ट्स देख सकते हैं सर? But 21st buying side, sir. 21st 11 Okay, buying side. so there was a sort of a delivery volume and this thing breakout. इसका लास्ट प्राइस था 355 which was above this level, right? 352 के ऊपर हुआ, मतलब it should proceed. So Proceed to buy. हाँ, so 21st of November. So 20th is sitting here. Now it should start trending, right? Like this. Now if it has to start trending, where is the resistance of this thing? Let's say this is the resistance. That is the 20th, sir. I'm traded on 21st. And 21st, no? This day. So I'm trying to find out the resistance level first. This proceeded, right? This went like Yes, this. sir. Correct. So this day, some resistance would have gotten broken. If the opening price was here, the resistance should be somewhere here above this level, right? So I'm not able to find any. Let's say this one closed here. So somewhere at this candle, I would say the resistance was there, right? Now this day it opened weak, right? So it is opening below this level. So it first went up. Yes, sir. Now when it is going up, okay,
See, it went up and it returned back. If that is the case, today's support is somewhere here. Say somewhere here, this day's support, right? It is somewhere here, right? And the resistance is somewhere here, correct? So let's say this place, okay? So the resistance is here. Sir, previous day it took support. Finally, it took a support, and we are waiting for a resistance formation, and then it will break to go up. You know, Actually, that perspective. What you have to do is first you saw this area on 20th of November. This is a breakout, correct? 20th of November is a breakout, right? So which means what? On 21st, it should proceed further. It should go up, right? Now, where was the previous high? 352. So somewhere closer to this level will be your support area. Above this level, right? So this is your resistance of 19th, which got broken on 20th. Say, even if I say just roughly draw this area, 352, your this day's support should form clearly above this area, right? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now let's say this day, the first support formation is, let's say, over here Yeah. at this area. Okay. Now, if that is the case, say the support is formed here. Okay, sir. So is the support higher than your resistance? Yeah. Right. So the support is higher than your resistance. So it started going up. So you might want to buy this area. Okay. Now, when it went up to this level, it came down, went to this level, it formed a resistance here. Yes, sir. Got it? So it formed a resistance somewhere. It formed a resistance somewhere over here Yes. on this candle. Okay. Now, if that is the case, your buying has to happen, say, in between this area and this area. Make sense? Yes, sir. I brought it same area that around 356.75. 356.75 would be somewhere here, right? Yes, sir. Somewhere closer to this area. Maybe you took this as a support. Yes, sir. Yeah, that is a support. Okay. If this is a support, another support cannot be formed. See, what is the sequence? After the support is formed, first a resistance will be formed. Only then a support can be formed. Right? Yes. Okay. So that is why. Now, see, when this also broke out, right? Yes, sir. Now, on this particular day, this was broken. Say, for example, this was a high, so this was taken out. Now, the first support should be formed above this level. Now, there is no support formation. It started breaking resistance itself. It was going up, up, and up. Right? Yes. Okay. Another thing that you should check. See, on 20th, you spotted this, right? Yes, sir. Okay. So on 20th, when you spotted this, this is where the high was, right? Of 19. Yeah. 20th that you spotted, right?
Now, what will happen? Either it will open higher than this, which it did not open, right? Or at Yeah. least it should open higher than the 19th price. Only then it has the Yes. capability of going up. Yes. Is this point clear? Yes. Point clear. Okay. See, you are betting on what? You are saying that, okay, there is a breakout. And when there is a breakout, it means that the price should proceed in this direction. Then either, see, how will I get to know is there optimism or not? The price should open above this level. It did not open, right? Then at least the price should open above this level, right? Yes, sir. Yeah. Now, if the price is opening above this level, it should protect at this level and should start breaking the highs. Yeah. Okay. If that is the case, if that is the case, don't you think this area, see, the volume is 15,510. The next one is 219, 21,991. So there was an increase in volume, right? When the volume was increasing, it formed a resistance, correct? Yes, sir. So it broke this level, right? This level was broken, Yeah. right? When this level was broken, it means it is trying to get into a downtrend, correct? Now, if it Yes. is trying to get into a downtrend, where is the high? The high is here. Yeah. If it has to turn around, it will form a closing high. Is this formed? Yes. There is a closing high which is formed, right? Now, if the closing high is formed, in between these two levels should be your buying level for this to go up. Okay. I took the resistance after this. Okay. And it kept proceeding up. See? So, what about yesterday, the 20th last support? We have to consider that also, no? Once it's form support and closed. See, And then we have to. this is the area, right? This is 20th, correct? Yes, sir. Yes, sir. Let's delete all this. Let's open this. See, I'm just considering that here was the open price, right? Do you think any support was formed? No, no. There was no support actually. It never went below its open price, correct? So that means this was the first resistance, correct? Am I right? This was the first resistance. And Right, let's sir. say this was the First support. place from where it started going up, right? Yes. So if I have to mark this, say I'll mark this area, right? Yeah. So this is your zone.
the concept that you are talking about, that it should retain, right? So this is the area, this is the zone, correct? It actually opened weaker than that, or say it fell below that, right? Started going up, okay, formed a support. This was the area only. Got it? It's okay, sir. But you said previous day, final few minutes, it's taking a support or resistance. We have to consider that last two candles, it took a support and closed. That is And for the after zone. that, we have to. Now, say for example, this is where it took support. No, sir. The last two candles, it took support. The last two candles. So this is where it took support. See, after a Okay. support, a resistance has to form. Only then a support can be formed. So this Yeah, is where it took support. This is where it took resistance. Correct? Resistance. Yeah. Right. And And then it took again, support. So which means what? yes, sir. From here it fell, and here it rose. Correct. Yes, And sir. if I look at it, say roughly this place is the support, Yeah. and say roughly this place is the resistance. Yes, sir. Hai. So this is the Yeah. support, right? Yes. Okay. Now it's opening maybe weaker, Below that. right? Yeah. Then it breaks out. It forms a high. It forms a closing high, right? Now, if it has formed a closing high now, the pattern has been resumed, right? Okay. Now it is coming down. It is at the same level. Before the third candle is not a resistance formation. Sir. The third one. One, After previous day support and 3. this one? Yeah, this one. Yes. This is a resistance, no? Yeah. Once previous day it's make a support and made a resistance. So we have to consider that waiting for breaking up resistance and it's coming down. That time the making support area we will buy. Right. See, So, opening is weak. You'll have to acknowledge that. Opening yes, is sir. weak, right? Yeah. Now, if the opening is weak, you cannot work with resistance, right? Okay. Point number one. See, if the opening itself is weak, then how will the resistance work out for you? Because people will be selling resistances. Now, if you still want to be a buyer, you'll have to buy at the support. Yes, sir. Okay, now say you want to do a continuation trade. The first thing that you will check, say delete all of it. You start with the report. You said that, okay, I see a breakout. So what is step number one? What is step number one? What did you see here? Is it a breakout? The price, yeah, price level breakout. Right. So price plus volume plus delivery Delivery quantity. Okay. Now tell me something. On this day, is the speculative volume higher or the investor volume higher? Both are higher. That's right. On this day, the speculative volume was say 2321979, correct? Minus Yes, sir. this number, which is 768,256, correct? So the Yes. speculative volume is roughly 15,53,000. Yes, sir. Right. Now, if it is 15,53,000, the next day, let me see.
This is the day, right? So Yes. 57, 78, 336, correct? Yes. Minus 24, 24, 57. 57, 199, correct? How much is it? Yes. 33 lakhs 21,000. Yeah. How much was the last one? 15. 15. So did the speculative volume increase or decrease? Increase. Increase, actually. Getting my point? Okay. Now you can also look at this value. This is telling you that 42% was investor volume and remaining was speculative volume. है On this day, Yes, sir. 33% was investor volume and remaining all was speculative volume. That is what it is telling you, actually. So is the investor volume very strong over here? Yes. No. The answer is no. If Definitely. the investor volume would have been very strong, then this value would have been greater than 50%, Oh. which means more than half of the total volume was contributed by investors or swing traders. Okay. Getting my point? Which is not Okay. happening here. Agreed? Agreed. Look at this day. Yes. 63%. It increased. This Yes, also sir. increased, right? And let's see, 337. 337, which means it is in between the previous price level, correct? Yes, sir. Right? Now, if it is in between the previous this thing, it seems that it has taken support from 330. Yeah. Correct? Because it touched 330.60, right? And it jumped to 337.05. Agreed? Agreed. On 27th of September. And it is telling us that the investor stake is very high. On this day, the speculators were less and there were more of investors. Don't worry about this value is 63, 64 or 37. 57. It is telling you that more than half of the quantity on this day was contributed by investors. Investor. That is why this value is more than 50%. Right. Now on 27th, so the formation is in between 26 and 27, right? And it is not Yes, a sir. price breakout, which means the price breakout is yet to happen. The price has not broken out. There is no price breakout which has happened. It did not close below 330.60 or above 344.90, which means there is about to be a price breakout. Agreed? Yes. Point number 2. Yes, sir. So on 28th of September, the breakout is going to happen in Adani ports. So I know that either side the price is going to break out. What was the date here? 28 September. 27 and 28. 28th, the price is going to break out. Okay. 20. सर ये अक्टूबर This देख is रहे हैं आप, September. ये This सितंबर. is September. Sorry. 28 September. Sorry यार. मैंने चार्ट थोड़ा छोटा खोला हुआ है.
So this is 27th and this is 28th, right? मैं थोड़ा ना चार्ट का टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहा हूँ. Okay. Now, on 28th, at least I know that the price is going to break out on either side, right? So on 27th, the price and volume breakout has happened. Sorry, the volume and the delivery volume breakout has happened. Okay. Therefore, now, when did it happen? On 27th, right? Yes, sir. 27. Got it? Yes, sir. It's fall down. Right? So I looked at that, okay, there is investor volume, right? And Yes, sir. most likely the volume would have come somewhere closer to this area, right? Yes. Because here the biggest of the volume is there. Now it opened weak, right? It opened Yes. weak. This is the area where it failed from, right? Thereafter, this is the low, right? And this is the high. So I know that today the price is either going to break out this level or this level, correct? Now see, Yes, sir. when I did this, did it come to exactly this low? See, right? Going like this, coming back, correct? Now tell me something. If it is coming to the support line after this, right? Can you say that yesterday's resistance is a pakka resistance now? Yes or no? Yes, sir. Which means it is falling and is coming back to the support. Why will it come back to support? It should not come back to support. No, it should straight away break out resistance. Correct? That is the Yeah. reason at this touch people started selling off. And the price broke on the downside. Yes or no? Okay. Now Okay. this is a scenario where the volume and delivery has broken out, but you know that the price has still not broken out. Okay. But Okay. let's say this day. Okay. Slightly the volume is also up, the delivery is also up, and I know that most of these guys are investors, right? So let's see, 328. Again, the same problem. See, it formed Yes. a resistance at 334, right? It is the same problem, right? The price didn't break out. It didn't close below 320 or above 338, right? Okay, after that, certainly the price has fallen. Let's see on this day. I see that it has increased. This has increased. Did it go down?
See, it closed Yes, sir. comfortably below this level, which means what? This is an example where the price, volume, and It's not delivery, breakout. all three have broken out. All three of them have broken out, right? Yes. Okay. Did it reverse? See, I will tell you this method. Okay. Uh, see, like you saw this method, you get to know which side the price is going to break down, right? Which side the price is going to travel. Okay. The same way, where the price, volume, and all three have broken out. Okay. You can find out which side the price is going to go. All right. Okay. Okay. So just give me 5 minutes. I need to visit the washroom quickly. Okay. I'll come back and I'll tell you. Okay.
All right, friends. Sorry, I'm back. Okay. So this one was the day, right? 5th of Yes. October, correct? So let's Yes. see. 5th of October. Delete. 4th, 5th. So this is the day when this happened, right? And the price has already broken down. Okay. 4th, 5th, 4th, 5th. Now let's see. This is 110. This is the area, right? So this is where most of the volume had come, correct? Yes. Now this day, on this particular day, did the price proceed? Did the price proceed? Answer is no. Yes. Okay. On the next day, did the price proceed? Yes. It proceeded. It broke this high and it went up, right? So Yes. the trending started, right? So this is telling you it was a buy volume. Hmm. Okay, it is telling you that investors actually bought on this day. Okay. Now, if Okay. investors bought on this day, do you see? So support formation. Got it? Yes, sir. Okay. Also, when this price proceeded, this was the highest volume on this day, right? And 1 o'clock. 1 o'clock is here. Yeah. Right? Yes, sir. It's taking support. It went to this level, then it went to this level, came back, broke out, took support, moved. Okay. So I Yes. actually have shown you two scenarios. One where Without price the breakout. where two parameters are broken out, which is the volume and the delivery volume, without the price breakout. And the second scenario in which all three have broken out. Okay. Okay. If all three have broken out, then the price has to continue. Yes. Okay. And if the breakout is pending, then the breakout will happen on one side, Yes. whether down or up. Okay. See, it is logical, no? Logical, hai na? Right? And Yes, sir. where I am taking it from, I don't bother whether this is 70%, 60% or what. I am just trying to see, is the investor overpowering the volumes of speculators? Because we know that it is only the investor who can drive price. Speculators cannot smoothly drive price. Correct? Yes, sir. Now look at this day. The speculator volume is so high, right? It seems that almost the entire volume is speculative volume, right? This day, see, as if the entire volume is speculative volume, correct? But look at this day, right? It is telling us that it is the maximum portion
more than half of it came from the investors, correct? Yes, sir. Okay, so which means what? That on this day, whatever it is, 31st of October, the price, if we look at it, 18.45, right? See, the price breakout has also happened, right? So which means what? The price has to continue, right? Correct? See, did the price continue? No, it reversed actually. See, 2nd of November, where did it go? Getting my point? Yes, sir. Okay. So you can utilize this information. You can decipher or decode this information this way. ठीक है? मैं बहुत Yes, sir. क्विकली Thank you. रेमंड देख लेता हूँ, बहुत क्विकली सिद्धार्थ. गाइस, सिद्धार्थ, उदय, राजीव जी, रिंकू, ये सब क्लियर है जो अभी बताया? Yes, sir. ठीक है, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा. Yes, sir. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, क्विकली मैं रेमंड देख लेता हूँ एक बार. ठीक है, सिद्धार्थ ने बोला था. यार इसमें ना ट्रेंडिंग तो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, अगर आप देखें तो इन 2 दिनों के बीच में एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ था, और ये अभी रेजिस्टेंस पे है. ठीक है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना है आपको. ओके सर. ठीक है, इसको, क्योंकि यहाँ कहीं पे ना इस वाली जगह पे एक रेजिस्टेंस है. ठीक है, ये आपको दिख तो सपोर्ट रहा है यहाँ पे, पर इसको ट्रेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से खुल के ऐसे हो जाए कैंडल नीचे की तरफ, रेड कलर का. ठीक है, ये ऐसा भी बन सकता है. ठीक है, गॉट इट. तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस वन. Alright guys, so we'll meet on Wednesday 28. ठीक है, थैंक यू सर. thanks, bye. Thank you, sir. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, bye bye. Thank you.